मॉर्निंग डे 3 इन वायनाड। चलिए आज का टूर प्लान बताने से पहले लेट्स डिस्कस समथिंग इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि इंसान को लिखना पढ़ना आता था 6000 साल पहले एंड दे कुड डू अ स्कल्पचर इन द वॉल। ऐसे ही एक केव यहाँ पे है, इसका नाम है एडिकल केव, जहाँ पे ये सब स्कल्पचर अभी भी इंटैक्ट है। पता नहीं उस टाइम पे इंसान दिखता कैसा था बट या उन लोग का जो कारनामा है वो अभी भी इंटैक्ट। चलिए ऐसे ही एक जगह है, वो है एडिकल केव, वहीं पे हम आज जाएंगे। एंड टुडे इज डे 3, टुडे इज संडे, सो वी विल पुश बैक टू बैंगलोर। सो आज का टूर प्लान ऐसा रहेगा, सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। सो वी विल लीव रिजॉर्ट बाय 10 आई गेस, 10:30 because checkout time is 11, well enough, well comfortable by the time we leave resort. उसके बाद हम जाएंगे एडिकल केव। सो एडिकल केव जाने के लिए बेस्ट टाइम है और बेस्ट प्लान है, while you coming to Wayanad, you can leave Bangalore early and you can visit the Edakkal cave on the way to your resort in Wayanad। और जिस दिन आप बैंगलोर जा रहे हो Wayanad छोड़ के, उस दिन आप you have to leave Wayanad little bit early and you can visit the Edakkal cave and go to the Bangalore। ये दो options है because Edakkal cave is in between Bangalore to Wayanad। So it's precisely मेरे resort से 28 किलोमीटर के दूरी पे है and from there Bangalore is 300 minus 20। So that's the plan। So आज का एक ही चीज़ रहेगा जो देखने के लिए, द ट्रैकिंग रहेगा। वहाँ पे ट्रैकिंग ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर। उसके बाद आपका 380 स्टेयर्स रहेगा, चढ़ के जाना पड़ेगा। इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ट्रैकिंग। तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है ट्रैकिंग। फिलहाल ब्रेकफास्ट टाइम, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग करके गाड़ी में निकलते हैं एंड आवर स्टॉप विल बी एडिकल केव एंड कंप्लीट ट्रैकिंग आई विल शो यू। अगर आप लोगों ने मेरा याना केव वाला ट्रैकिंग नहीं देखा है, सो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, you can see there। That is also very nice trekking, it is also cave trekking। You might love it, so see you। Some biker gang came and these are the bikes। This bike I like the most. Which bike? Okay, time to say goodbye to Petrol Resort। Time is at 11 a.m. Day 3, as I said earlier, so we are heading towards Edakkal Cave। So it's towards Bangalore। So अच्छा ही है हमारे लिए, ये ऑन द वे पे पड़ता है। हमने चेकआउट करके अभी गाड़ी में निकला हूँ, तो टाइम है अभी ऑलमोस्ट 12 o'clock। हम हाफ वे थ्रू आ चुके हैं एडिकल केव। अभी यहाँ से दिखा रहा है 5 किलोमीटर ही है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि इट विल टेक 2 hours टू कंप्लीट द ट्रैक एंड आफ्टर दैट विल पुश टुवर्ड्स बैंगलोर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ट्रैकिंग, कितना हार्ड है और क्या है एडिकल केव में देखने के लिए। ऑन द वे टू एडिकल केव यू विल फाइंड वन मोर स्पॉट। ये इसका नाम है फैंटम रॉक। तो आप अंदर जा सकते हो। सो ये एक काइंड ऑफ ट्रैकिंग है, छोटा सा रॉक्स है ऊपर। सो कपल ऑफ रॉक्स ऐसे सेट किया हुआ है कि वो ना गिरे। तो या इट्स अ काइंड ऑफ वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट। सो यू कैन डेफिनेटली, इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू रिलैक्स, सो नॉट मच टूरिस्ट, आई मीन आई वुड से दैट इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, सो यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई। वी आर एट एडिकल पार्किंग लॉट। सो पार्किंग लेकर आपको कोई टेंशन नहीं, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, सो दिस इज़ एडिकल केव एंड दिस इज़ द वे वी शुड गो। आई थिंक somewhere we have to take the tickets again। Let's see distance from Edakkal cave। So if you're planning to come Edakkal cave and from here if you want to go anywhere, so these are the distance। You can cover some of the places which is nearby। It's a very informative one। Alright, so we have started our trekking. Similar kind of cave trekking we have done earlier also, Yana cave। So Yana cave was almost 4 kilometers trekking and through jungle। That was a different experience altogether। If you want to see that video, please click on the I button। Now this is really stiff। उल्टा करके दिखाता हूँ आपको कितना स्टिफ है ये, देखिए। पता नहीं कैमरा में कितना आसान दिख रहा है, बट ये
This is real difficult. चलिए ऐसे ही दिखाता है आपको. जब पहुंचे यहाँ पे तो हल्का फुल्का बारिश हो रहा था, इसलिए छतरी लेकर आए. लोग दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना स्टीप है. ये केप टाइप का है, पता नहीं क्या है, कहाँ जाता है. ठीक है, चलो. So I did not actually focus there, sorry. So what they're saying, there's a 12D theater, so they're charging only 100 rupees. If you do it in $1 Bangalore, 750 rupees. If you do it in Banasura Dam, it is 180. Because people are very less here, so that's why they reduce the price to 100. So let's see, if time permits, we will do it. Otherwise, it will be very difficult. Take some break here. I'll catch you after the break. Alright, we'll resume our journey after the short break. Let's see how far from here. Sir, how far it is? How far? Little bit far. Then after that, for going inside, you have to walk 400 steps. Total cave. Oh, thanks. So here is the ticket counter. We came from this route, and there's a cloakroom. All those things are there. So entry is 50 rupees, children is 30, and there is a toilet facility. So if you want to avail that, please ensure that you are taking it here. Otherwise, you will not get it anywhere. So we are just standing in front of the cave. So this is the entry, and we will go inside. Let's see what's the inside. I'll show you from the back camera. Okay, so here the start of 380 stairs. Alright, we'll take a break here. So let's start our journey after a short break. Yeah, this is a small cave, and after that there is a big cave. So the moment you enter here, it's very cold, and yeah, and all your exhaustion will be subsidized. It's really nice. Chaliye. So this was a small cave, and there is a big cave. For that, again you have to climb some more stairs. ये पैंडेमिक के टाइम में ये बंद था, बट अभी खुल गया है. So fun is there in the large cave. चलिए दिखाते हैं. I'll tell you the history also. You can see the stairs. This is very tough. You can see. Here everyone is climbing. See, this is very tough to climb.
Alright, so this is what I was talking about. और आप मेरे पीछे देखोगे, so these are the drawings or these are the imprints is done by the people 6000 साल पुराने हमारे जो ancestor थे. जैसे मैंने पहले बोला था कि दिखता कैसा था वो मेरे को नहीं पता था, बट ये जो engravings है, ये जो sculpture है wall पे, so this is done by these things. So I think I have a guide here. So this my name is Nash. Nash Jos. Sure. Sir, coming from Bangalore. Bangalore. Yeah. So this is the main cave here, sir. Okay. Edakkal caves. So Edakkal is the Malayalam word. Edakkal means in between stone. Can you see that stone? So that is this name called Edakkal. Eda means in between, stone means skull. And this cave from due to earthquake in 30,000 years back. And after people lived here, maybe BC 4000 or 2000 between people lived here. That time also people are just doing some work. That time is not speaking language here, only the picture languages. So this is the main figure here, one tribal man standing like this. Can you see? Yes. We have dress, hands, body, like in here, on tribal chief. Tribal chief. So this is the front side, and one is the back side. See the back side here? We have dress, hands, body, like in here. You can see one lady here. We have dress, hands, body, like a lady, small one. Yeah. One baby here. Baby above. And above that baby, you can see the wild animal here. See? Other round, no, that is sun worship. Other rock, yeah. Sun worship. And above the sun, you can see one peacock. Above the sun, you can see a small. And one human face, the eyes, nose, and lips here. See? One elephant, see front leg, back leg, tail, body, trunk, tusk, straight. Elephant. And one more lady again. What is this with This is the one chief of the tribal man, front and back side. circle. That is also a man dresses. dresses? So this is the tribal band that you're talking about. Then after again people lived here, can see the Sanskrit. Let's come on to Sanskrit. Come sir. Yeah. You can just look at the carvings, is 6,000 years old. After again people lived here, can see to Sanskrit. One is Tamil Brahmi and Prakriti. So this part is maximum 2,500 years back. And this means a man who killed lot of tigers, the name called Nandu lived this. Because that time people are just using only the bow and arrow. And that time is one man who killed an animal, that means one hero man. And another one is Prakriti. Prakriti means Sri Vishnu Varma the king lived this spot. Actually different times, different groups of people lived here because this is a good shelter here. And this cave discovered by 1894 a British man, the name called Frederick Fawcett. That man is find out this place. So now we are 4,000 feet above sea level now. And this is the one of the oldest carvings in the world. And similar carvings you can see only in France, in Lascaux. And this hills all named called Ambakuti Hills. Ambakuti. Now 2008, before you can just go to the peak, you can see the three sides aerial view. Kerala, Karnataka, Tamil Nadu view, but now is not allowed. Kerala only one district is two sides border. This Karnataka, Chambaranaga, this is Tamil Nadu, Nilgiri, straight way to Kerala. And this hills all named called Ambakuti Hills. So he wants to see that what is there at the dead end. So chalo, let's see. 6000 साल पहले ये जो मेरे पीछे ये जो दिख रहा है आपका स्कल्पचर्स, सो दिस इज बीन डन बाय आवर एंसेस्टर. यू नो इसका जो बनाया हुआ स्कल्पचर्स है वो अभी भी इंटैक्ट है. यू कैन फील, यू कैन टच एंड यू कैन स्टिल सी इट. दिस इज़ अ हेरिटेज साइट. तो छोटा सा हिस्ट्री मैं बता दूंगा. जैसे आपने यहाँ का जो गाइड है उससे सुना है, फ्रेड फेवक, उसने मलाबार का पुलिस इंस्पेक्टर, सो ही डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर केव. एंड इन 1901 this he actually informed some magazine that about this cave, and since then people understood the the importance of this particular cave and historical value of this particular cave. So उस लोगों ने ये साइट को एक हेरिटेज साइट बना दिया. सो अच्छा है कि हमारा ये केव बच गया है, बिकॉज वी कैन स्टिल सी दिस केव इज हैविंग ए सिविलाइजेशंस लाइक इंडस सिविलाइजेशन का टच है, बिकॉज अंग्रेज़ों ने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडिया में. एटलीस्ट ये केव बच गया, एंड ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस इन वायनाड. डेफिनेटली यू शुड कम. यू विल नॉट रिग्रेट द ट्रेकिंग दैट यू हैव डन. इट इज़ रियली नाइस एंड ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. हाँ, ट्रेकिंग थोड़ा टफ है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस. खास करके जब ये एनग्रेव्स देखता हूँ, ये आपका केव के अंदर ये जो एनग्रेव्स मेरे को दिखता है, इट्स प्राइसलेस. यू विल नेवर गेट इट एनीवेयर.
जो मेरे को बताया गया था कि 4000 फुट सी लेवल के ऊपर है हमारा हम, और ऐसा एक केव सिर्फ वर्ल्ड में ऐसा ही एक लौता केव है जो जहाँ पे 6000 साल पुराना एक संस्कृति अभी भी इंटैक्ट है। तो पता चल गया कि 6000 साल पहले लोगों को लिखना पढ़ना आता था। भाई पढ़ाई कर लो ठीक से। चलिए चलते हैं अभी पार्किंग में, वो एक अलग सा टास्क है। सो यहाँ से वैनाड का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है और हम लोग अभी काफ़ी लकी है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं है, पूरा क्लीन दिख रहा है। इतना मेहनत के बाद एक नारियल पानी तो बनता है। रिफ्रेशिंग, माय गॉड। पूछा भी नहीं कितना रुपया है, ऐसे ले लिया। पहले पीते हैं उसके बाद देखेंगे। क्लाइंबिंग डाउन उतना टफ नहीं है, इट्स ओके। सो आप जब एडक्कल केव से नीचे आओगे, ये बहुत सारा स्पाइसेस, टी, हनी, ये सब का दुकान है। यू कैन ट्राई यूकलिप्टस ऑयल, यू कैन ट्राई प्योर कोकोनट ऑयल। भाई ये किसी ने बनाया नहीं, दिस इज अ व्हाट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस हर्मिटेज होटल, बट इट इज़ वेल थॉट। जो भी यहाँ पे आएगा सबको लगेगा कि ये भी 6000 साल पुराना है, बट ऐसा है नहीं। ये एक वेल थॉट, वेल प्लान एडवर्टाइजमेंट है होटल का। अभी ऑन द वे टू बैंगलोर, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम लंच करने के लिए आए हैं। सो द होटल का नाम है विल्टन। एक्चुअली मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं होटल का नाम ही भूल गया था। ऐसे ही खाने के लिए देखा कि बहुत ज़ोर का भूख लगा है, सो मुझे लगा कि नहीं अभी खा लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे बंदीपुर नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट आएगा, उसमें कम से कम 30-40 किलोमीटर और 1-1.5 घंटे के लिए तो खाना नहीं मिलेगा। टाइम हो चुका है अभी कम से कम अभी 3 o'clock, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट वी कैन फिनिश ऑफ आवर लंच एंड प्रोसीड टुवर्ड्स बैंगलोर। तो या सो होटल का नाम है विल्टन। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैलेट पार्किंग है, सब कुछ है। खाना कैसा है देखते हैं। होटल का डिटेल्स आई विल जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हो। इट इज़ ऑन द वे फ्रॉम वायनाड टू बैंगलोर एंड इट इज़ राइट बिसाइड द हाईवे, सो यू विल नॉट हैव एनी चैलेंज टू फाइंड इट। सो अगर प्राइस चेक करना है तो यू कैन पॉज इट एंड चेक इट, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन टू एंगेज किड्स। See, my son is actually, killing the time by finding all these puzzles. It is on the coaster. So, yeah, I like the concept. They have a special plate for kids. It's really nice. So the food taste was great, service was excellent, and price was reasonable. This is the best kids friendly restaurant I have ever come across. Starting from coaster to toilet, everywhere they have given extra preferences for kids, which is really nice to see. Time to say bye bye Wayanad till next time. With this I am concluding Wayanad trip series. If you like the video, please do share, subscribe with friends, and please do comment and let me know your thoughts. I will definitely respond to that. Thank you and take care. Bye bye.